Hello, hello. Hello. Yes, sir. Hello. When eigenvalues are repeated, previous question we did when non-repeated. Here we can see a question will be there. We see in that question when eigenvalues are repeated. This is the matrix. Any type of matrix you may get in exam, as you know. Okay. As Okay. an example, we have taken this one. So let us see the solution. Same thing we can go. Eigenvalues के लिए भी same thing करना है. Only the case when it is repeated. So we start, let us assume that this is our matrix A. Three, two, two, one, two, two, -1, -1, 0. So we can go for A minus lambda I value, which is called characteristic equation. That will be equating to 0 also, which means that magnitude of 3 minus lambda 2, 2, 1, 2 minus lambda 2, -1, -1, 0 minus lambda is minus lambda. And then close it, equating to 0 also. Then same rule, plus minus plus, that is 3 minus lambda into row and column we neglect, that is AD minus lambda into 2 minus lambda, minus into minus plus 2 on the 2. Close it. Second element with the minus sign. Column and row we neglect. 1 into minus lambda is minus lambda. Minus into minus plus 2. And then plus 2 into minus 1. Minus into minus plus 1 into 2 minus lambda, equating to 0. This is 3 minus lambda into, it's a minus 2 lambda, it's a plus lambda square. This is plus 2 minus, if you multiply 2 lambda and minus 4, this is plus 2 into, this is minus 1, plus 2 ones are 2, minus lambda, equating to 0, which implies that if you multiply with this 3 all the terms, minus 6 lambda plus 3 lambda square Plus 3 lambda square plus plus 3 2s are 6. 6, minus into minus plus 2 lambda. This is 2 minus lambda square, na sir? 2 lambda square. This is minus lambda cube. This is minus 2 lambda. This is plus 2 lambda. This is minus 4. This is minus 2. This is plus 2 2s are 4. This is minus 2 lambda is equal to 0. Sum of the lambda values minus 2 lambda plus 2 lambda cancelling here. Then you see lambda cube is a single term, that is minus lambda cube. Minus lambda cube. How many lambda square terms are there? A single term we are getting.
3 lambda square plus 5 lambda square. 5 lambda square. Yes. And how many lambdas are there? Minus 6, minus 2, minus 8 lambda. Minus 6 minus 2 minus 8 lambda. Yeah. And constants are 6. Yeah, Plus plus 4, 6 minus plus 4 also cancel here. yeah. 6 minus Minus 2 4 is plus plus 4. 4 is equal to 0. We multiply with minus sign and then lambda cube minus 5 lambda square. This is plus 8 lambda. This is minus 4. This is equating to 0. Now again you see lambda is equal to 1 definitely satisfy this equation. Minus Yeah. 5 minus 4 9, 8 plus 1 is 9. Then immediately synthetic division method. 1 1 minus 5 8 4 0 1 1 minus 4 minus 4 plus 4, right? Here it is minus 4 now. That's what it Yes, is, sir. plus 4. This is the last term 0. We are getting lambda square minus 4 lambda plus 4 equal to 0. It is the expansion of lambda minus 2 whole square, right? It means the lambda values are 2 comma 2. Yes, sir. So finally 2 eigenvalues, comma 2 comma yes, कितने आ रहे? 1 comma 2 comma. 2 comma 2 comma 2. 1 comma 2. So repeat it. What do you say? Repeat it. Yeah, repeated. Eigenvalues. So for each eigenvalue you will get a corresponding eigenvector. But अगर repeat हो रहा तो कैसा करना है? बस उतना ही. That's a concept. So when case 1, when lambda is equals to 1, when lambda is equal to 1 and eigenvector is x1, x2, x3 only, this is 2, this is 2, this is 2, this is 1, this is 1, this is 2, this is minus 1, this is minus 1, this is minus 1 after simplifying, okay, into Yes, yes, sir. x1, x2, x3 is equals to 0, 0, 0. Now our intention to make the below diagonal element as 0. This one we have to make it 0 and moreover this one also we have to make it 0. इसके लिए क्या करेंगे? R2 changes to 2 multiply with R2 and then subtract from R1. This is one case. Another case is R3. 2 multiply with R3 then add with R1. Okay, if you substitute this operation, if you apply, you get it 2, Yeah. 2, 2. What happened here? 0, 0, 0. 2, 0, 0. Yes. Here x1, X2. x2, x3 is equal to again here 0, 0, 0, right? And if you Yes. convert into the matrix form, hello, yes, क्लास चल रही मेरे पास. 2x1 plus 2x2 plus एक 2x. काम कर सकते हैं R1 changes to
r1 divided by 2 and r2 changes to r2 divided by 2. This is possible now. यस बट क्यों करते सर डायरेक्ट बिल? आ जा रहा, ऐसा भी कर सकते हैं, आप करें तो अच्छा है। एक वन ओके वन वन, आप नहीं करे तो भी नो प्रॉब्लम। ओके दिस इज 0 0 0, x1 x2 x3, this is 0 0 0. Now if we simplify, we will get the first x1 plus x2 plus x3 is equal to 0, ठीक है ना? और मोर ओवर x2 also equal to x2 or x3 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 also equal x3 to is 0. equal to If x3 is 0, we are getting x1 plus x1 x2 is plus equal to 0. x2 is equal to 0. So let us assume that any one of the value, like if x1 is is k. x2 is k, suppose कौन सा भी ले सकते हैं। If x2 is equal to Mhm. k, then definitely x1 is minus k. x1 is minus k. If we get all values, then our x1 becomes x1 x2 x3 minus k plus k 0. If you take k common, minus 1 plus 1 0, एक हो गया केस 1 when lambda value is 1. अब अपना केस जो इंपॉर्टेंट केस है when lambda value is 2, that is repeated. ओके ना? yes sir. when lambda is equals to सेम 2, आते शायद. नहीं वही तो यहाँ पे बताना है, आपने तो ये प्रॉब्लम करता ही नहीं था। ओके ओके अच्छा 1 2 2 1 0 2 minus 1 minus 1 minus 2 x1 x2 x3 is equal to 0 0 0। अभी देखिए, अब ऑपरेशन करेंगे अपन, इसको 0 कर देंगे, r2 माइनस r1 से इसको चेंज कर देंगे r3 प्लस r1 से। r2 changes to r2 minus r1 and r3 changes to r3 plus r1. We are getting here 1 2 2 0 minus 2 0 0 1 0 into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0। ठीक है, अभी कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सो इक्वेशन बना देंगे x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to 0। एक केस हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन में दो केसेस आ रहे, देखिए यहाँ पे अपने को -2x2 इक्वल टू 0 -2x2 is equal to 0 implies we say that x2 is 0, right? And yes sir. x3 लास्ट एक -2x2 0 हो गया। ओके, if x2 0, then what is this equation number 1 becomes? x1 plus 2x3 is equal to 0. x1 plus 2 x3 is equal to 0।
This implies x1 is equals to minus 2x3. Correct? If you take x3 value is equal to k, what about x1 becomes minus 2k now? या -2. तो यहाँ x1 आ गया, इधर x2 आ गया, एक x3 आ गया. तो then what is this capital X2 becomes? x1, x2, x3 is equal to what we are getting here, minus 2k is x1, x2 will be 0 and x3 will be k. एक केस आ गया. दूसरे केस में आप क्या करना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. देखिए R3 प्लस ओके, -2, यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती हो गई शायद. -2, -2 प्लस 2 0. अच्छा, और यहाँ पे x2 0 आ गए, और ये इक्वेशन में अगर अपन डिफरेंट वे में अगर करना है और एक एक x3 वैल्यू चाहिए आप, या तो यहाँ पे कैसा करते हैं देखिए. पहले x2 को 0 करके इक्वेशन को x2 और x3 के फॉर्म में लेके, x2 0 करके x1 और x3 फॉर्म में लेके, दूसरे केस में क्या करिए, x3 को 0 करिए. मगर x3 को 0 करने के लिए फिर x2 0 हो रहा, दूसरी बार भी x2 0. अब इसका जो रिवर्स केस होता देखिए ये होता है. कैसा होता, यहाँ पे सेकंड 0 आ गया ना, जी. दूसरे केस में थर्ड वाले को 0 ले. मतलब आप ओके, एज्यूम करना है यहाँ पे x3 को 0 अज्यूम कर, ओके. x3 को 0 अज्यूम करे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाती है देखिए. x1 प्लस 2 x2 इज इक्वल टू 0 बन जाता, ठीक है ना. हम्म, इसमें अगर अपन x2 को k ले ली, तो तो x1 x1 -2k. ऑटोमेटिकली -2k हो जाए. हम्म, तो दिस इज -2k, दिस इज k 0, और इसमें से अगर आप k कॉमन भी ले ली, गेट -2 1 0. यहाँ से यहाँ से भी अगर आप k कॉमन लेके लिखे, वी गेट -2 0 1. तो ये करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कब आइगन वैल्यू अगर रिपीट हो तो ऐसा हो. ठीक है, एक बार ओके. x2 को 0, एक बार x3 को 0 करके फाइनली इसको क्लोज करना. ये है जी. आपका रिपीटेड आइगन वैल्यूज. मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूँ या जरूरत नहीं? ये वो सेम पीडीएफ है ना सर? वही सेम पीडीएफ इसमें पूरा आ जाता है, उसको ही कंटिन्यू कर रहा हाँ, तो शेयर कर दीजिए. हूँ. ठीक है. और किसमें कुछ डाउट है बोले सर आप? मैं कैनोनिकल फॉर्म बोल रहा था सर. एक क्वेश्चन देख लेंगे उसके ऊपर. कैनोनिकल फॉर्म टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म टू वो कैनोनिकल. ओके, दो भी आ सकते क्या? आ सकते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म तो ओयू सिलेबस में नहीं है. अलबत्ता क्वाड्रेटिक अच्छा, फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म से जो कन्वर्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है. वो है. तो मैं कर देता हूँ, अभी एक क्वेश्चन कर देता हूँ, आइडिया भी हो जाता है आपको कैसा करना. जी सर. जी सर. और सर वो जो आप वीडियोस भेजे थे, जो 8 या 9 वीडियोस है, उसमें से बहुत सारे वीडियोस रिपीटेड है सर. मैं देख लेता हूँ, उसको देख लेके जो रिपीट है निकाल दे के फिर मैं आपको जो आपके लिए ज़रूरत है वो वीडियो सेंड कर देता हूँ. ठीक है, और भी थोड़े मतलब इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन है. फंक्शन से बीटा गामा. नहीं, स्पेशल फंक्शंस में नहीं भी जाता हूँ. आपको ये रिपीटेड वैल्यूज के ऊपर, केली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर जो मेरे वीडियोस है वो जी आपको सर, मैं ओके. यूट्यूब से पहले सर्च कर लेके फिर आपको सेंड कर देता हूँ. मैं आपको आज आज पूरा आप ठीक. फाइनली रिवीजन कर लेके कल एग्जाम के लिए आप रेडी रहिए. कल तो नहीं होती क्लास, आज ही लास्ट.
जी जी वही। आज जितना भी है अपन रिवीजन के लिए, मैं आपको अब ये क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन बता देके फिर आपको मैं जी यूट्यूब से सर्च करके सेंड करता हूँ। देखिए ये ठीक है टाइप का सर। क्वेश्चन का आंसर, देखिए क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे मैं। क्वेश्चन करता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता हूँ। क्वेश्चन है, अच्छा। फाइंड द नेचर ऑफ द quadratic form, the quadratic form and index and signature, index comma signature of x square plus y square plus z square minus 2z square. Sorry, it is not only z square, it is 2z square. 2z square minus 2xy, ये पूछ रहे थे ना, प्लस 4xz प्लस 4yz, राइट? दिस वन हाउ टू यस सर। कन्वर्ट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म, आप देख लीजिए सॉल्यूशन। Suppose that matrix what we formed with this, that is denoted with A. This is equals to the elements which had squares will come in diagonals. Coefficients. X square coefficient is 1 ओके। now. Y square यस सर। coefficient is 1. Z square coefficient is 1. These are come in diagonals. उसके बाद हम्म। एक्स वाई जो रहता, एक्स वाई का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में डिवाइडिंग विथ 2 करके लिखना, ठीक है? फर्स्ट रो फर्स्ट रो थर्ड, थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे होता है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जी। नहीं 1 2 2 1 है, सॉरी मैं गलत बोला। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिवाइडिंग विथ 2, व्हाट हैपेंड, आंसर इज -1 एंड माइनस -1। वन माइनस वन। ठीक है, ये देखिए 1 3 है, 1 3 मतलब पहले इससे जाएंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिवाइडिंग विथ 2, कहाँ था सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम डिवाइडिंग विथ 2 करके लिख दी। इसके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यस। एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिवाइडिंग विथ 2, दैट्स इट, ये बन गया आपके मैट्रिक्स। ओके। ठीक है, अब इसको, ये हो गया यस सर। क्वाड्रेटिक फॉर्म टू मैट्रिक्स फॉर्म भी बोल सकते हैं आप, कैनोनिकल फॉर्म भी बोल हम्म। सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म दोनों सेम है। अब इसको क्या करना, फाइंड द नेचर मतलब। नेचर बोलते हैं इसमें कितने पॉजिटिव स्क्वायर टर्म्स है वो बताना है। तो ओके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, ये मैट्रिक्स को मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मैट्रिक्स को आपको ऐसे फॉर्म में, डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, मगर शायद आपको उतना टफ नहीं पूछेगा, 2 मार्क्स में है ना, इतना ही पूछेगा आपको। सिग्नेचर और इंडेक्स किसको बोलते हैं वो तो मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये लॉन्ग आंसर आया था सर लास्ट ईयर।
लॉन्ग आंसर है बोले तो फिर अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। लॉन्ग आंसर में पूछा बोले तो फिर अपने इसको क्या करना, इसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करे तो इंडेक्स ऑर्डर सिग्नेचर मिलता है अपने। ओके। डायगोनलाइजेशन करना पड़ता है, एक बड़ा प्रोसेस है उसके पीछे डायगोनलाइजेशन का। कैसे करेंगे फिर इसको, करेंगे फिर आपको डायगोनलाइजेशन। नहीं नहीं सर, वो सिग्नेचर और इंडेक्स दिखा दीजिए आप। सिग्नेचर और इंडेक्स भी बोलते हो, देखिए अब मैं थोड़ा ओरल बता देता हूँ आपको। सिग्नेचर और इंडेक्स कैसा फाइंड आउट करते हैं कोई भी मैट्रिक्स का। सपोज आपको डायगोनल में कन्वर्ट करने के बाद यू गॉट द मैट्रिक्स एज जस्ट एन एग्जांपल, हम्म। 1 0 0 0 6 0 0 0 -24। एक्चुअली वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू दिस डायगोनल फॉर्म। उसके बाद इसको अगर अपन डायगोनल को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखे इन टर्म्स ऑफ वाई, सो y1 स्क्वायर प्लस 6 y2 स्क्वायर -24 y3 स्क्वायर। ठीक है, y3 यस सर। स्क्वायर तो y1 y2 y3 लगा दो। उसके बाद आप देखिए इंडेक्स का मतलब कितने पॉजिटिव स्क्वायर टर्म्स है इसमें? ओके। दो। दो, दैट्स 2। ओके। यस सर। सिग्नेचर के लिए फॉर्मूला है 2s - r, 2s - r। इंडेक्स विल बी डिनोटेड विथ s एंड r बोल दो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 है, यस सर। तो 2s, 2 into s value is 4, 2 2s are 4 -3, so the signature वन। is 1, like ओके उसको ओके। नेचर बोलते हैं। ठीक है, जी सर। नेचर में तीन चीजें हम फाइंड आउट करते हैं अपन, एक रैंक रहता, एक इंडेक्स रहता, हम्म। सिग्नेचर हम्म। रहता। इंडेक्स का मतलब ओ- पॉजिटिव स्क्वायर टर्म्स, सिग्नेचर का फॉर्मूला है डायरेक्ट 2s - r। ठीक है, और कुछ जी डाउट सर। है तो मेरे को मैसेज करिए, फिर मैं उसके हिसाब से आपको प्लान करके क्लास कर। ठीक है। जी ठीक है सर, ओके। ओके।